back to my channel, and in today's video, as you guys must have read already in the title, I'm gonna be sharing with you guys how to transform your day makeup look to your night makeup look. Basically, अगर आप दिन पे कहीं पे निकल जाते हो ड्यूरिंग पूजा, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो होना ही है इस बार, लेकिन मास्क पहनना और सैनिटाइजर अपने साथ कैरी करना ना भूले और थोड़ी सी डिस्टेंस में ही फ्रेंड्स के साथ रहे, हैंडशेक हग उतना ज्यादा ना करे तो बेहतर है। बाकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। कमिंग बैक टू दिस वीडियो, आज का वीडियो स्पेशली अष्टमी के लिए है। एंड अष्टमी को हम सबको पता है कि सुबह होता है ये अंजलि देने का प्रोग्राम, दैट इज डिलीवरिंग फ्लावर टू गॉडेस दुर्गा माँ। सो बेसिकली सुबह काफी लोग सुबह निकलते हैं फॉर द अंजलि पर्पसेस और फिर पूजा करने के लिए। अष्टमी नाइट के लिए तो चाहिए एकदम से पार्टी वाला लुक, तरकता भरकता पार्टी मेकअप लुक, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल होता है कि दिन में ये पूजा करके आने के बाद और फिर शाम को निकलने के बीच में काफी कम टाइम बचता है, तो ज्यादा एकदम फुल ऑन मेकअप करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करके कैसे उतना वो कम टाइम स्पैन में जल्दी से लुक ट्रांसफॉर्म कर सके फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट लुक, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, माई आईब्रोज आर डन, आई हैव अ लाइट ब्राउन आई शेडो ऑन माई आईज, जो कि हम लोग नॉर्मली दिन में बाहर जाते हैं तो इतना तो कर ही लेते हैं। तो ये तो रहा डे मेकअप लुक, आईलाइनर भी है एंड काजल भी है, एंड आई एम वेयरिंग अ वेरी न्यूड लाइट लिपस्टिक, सो दैट्स इट। एंड हल्का सा फेस पाउडर है बस, और कुछ नहीं है। क्विकली यही डे वाला लुक को मैं नाइट वाला लुक में ट्रांसफॉर्म करके आपको दिखाती हूँ। की इंट्रो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। चलो जल्दी से मेकअप शुरू करते हैं। सो आई क्विकली चेंज्ड इनटू अ साड़ी. दिस इज अ ब्यूटीफुल नेवी ब्लू साड़ी. दिस इज अ पार्टी वेयर साड़ी. Let's just start with the eye makeup first to avoid any kind of fallout. Taking this brown shade on the crease line, and then using a flat brush, I'm taking this shimmery shade and applying it halfway on my eyes. Using the enquiries under the C palette, and from here I'm using this golden shimmer. Insta liner to do the eyeliner once again, because as you can see there are a little bit of fallout. To get rid of the fallouts, just brush it off. I'll be using Cara wipes and cleaning up my face. Before applying any sort of makeup, just clean up your face nicely and then apply your makeup.